The Balochistan province forms the bulk of the landmass of Pakistan and borders its neighbors Afghanistan and Iran in the west. It lies at the convergence of the Indian and the Arabian tectonic plates, situated at southeastern part of the Iranian plateau. Most of the mountains are barren and devoid of any vegetation. Some were formed as a result of volcanic eruptions when the earth was still young. The Suleiman Mountains dominate the northeastern corner of the province. The region south of the city of Quetta, the provincial capital, has a sparse desert terrain with pockets of habitable towns, mostly near rivers and streams. Balochistan has a relatively small area of plains as compared to its total land area. Mountains dominate the terrain, and valley floors and Piedmont plains make up only 15% of the landscape. Water is the most precious and scarce commodity. Where seasonal rivers and streams are available, they support small numbers of human settlements, which come up as green sprouts against drab and barren surroundings. Quetta, the provincial capital, is a modern metropolis. The shops, the businesses, both small and large, speaks of the dynamism of its people. Quetta boasts modern structures, its vast sprawling university campus, medical colleges, hospitals, in short, all reflections of a modern
Besides Dar is home to the Balochistan University of Engineering and Technology, a public sector university established just outside the city. It provides bachelor's and master's programs to students in multidisciplinary engineering studies. It was established in 1978, and about 250 students graduate every year. बलूचिस्तान में सर्वे हुआ है हमारा, तो 80% जो इंजीनियर्स हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से सिलेक्टेड हैं, यानी बीएनडार हो गया, हमारे पास कैस्को हो गया। सबसे ज़्यादा जो तरजीह दी जाती है इस यूईटी को दी जाती है। Another modern educational institution that began its life in 2007 is the Balochistan University of Information Technology, Engineering and Management Sciences. Its modern architecture represents the resolve of the people to prepare their coming generations for the future. The enthusiasm and zeal of its students is matched by the determination of its faculty to impart world-class education and preparing a generation of professionals. Business incubation center we have for the fresh graduates to offer them the business services and the jobs for them. They are job providers rather than job seekers. हमें बहुत फ़ख्र है कि हमारे बलूचिस्तान में कोयटा में बीटम जैसी यूनिवर्सिटी है। हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो बलूचिस्तान के बच्चे, वो आगे आए और वो आगे जाकर बाकी सूबों के साथ वो कंपटीशन में हिस्सा ले, वहाँ पे कम्पीट करें और राइजिंग बलूचिस्तान से जाते वो राइजिंग पाकिस्तान पे जाए। Quetta Institute of Medical Sciences is another state-of-the-art addition to the educational institutions that the government has established to provide education facilities for the aspirant youth who wish to excel in the field of medicine. Quetta Institute of Medical Sciences providing us all basic facilities of medical education. It is a good medical college of Balochistan
and it's going to be one of the best medical college in all Pakistan. And the girls who belong to rural areas like us, this is a great opportunity for them to gain the education. Balochistan was lacking in doctor-patient ratio, which was 1:1600 patient, and that was because there was only one medical college in Balochistan. Visualizing this, Quetta Institute of Medical Sciences was established in 2011, and its first batch started its education in January 2012. The health department currently runs 49 hospitals, 641 basic health units, 102 rural health centers, and 92 maternal child health care centers to provide health services to the vast and scattered population of the province. कि हमने LHWs को ये बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है। माँ और बच्चे की सेहत के बारे में हमने उनको अच्छी तरह अवेयरनेस भी दी और उनको इंसिस्ट किया कि वो आप लोग फील्ड में जाकर माँ और सेहत के लिए कुछ काम करें ताकि लोगों के हालात ज़िंदगी भी बदल जाएं और हाइजीन के बारे में भी उनको हम लोग गाइडेंस देते रहते हैं और यही हमारा फंक्शन है और इंशाल्लाह हम इससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। मंथली जो हमारी डिलीवरीज और वो होती है जो हम MCH सर्विसेज देते हैं नियर अबाउट 50 पर मंथ, जो कि शुरू में हमारी 20 से अबव नहीं जाती थी ड्यू टू दिस वन कि मेडिसिन हमारे पास वाफर मकदार में है, हमारा स्टाफ कॉम्पिटेंट है, हमारे DHOs हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं और हमारे DCO साहब भी सब मिलकर हम एक बेहतरीन कोशिश करते हैं कि काम कर सकें। The provincial headquarter Quetta has 8 hospitals, including the Bolan Medical Complex, which houses modern diagnostic and medical instrumentation facilities as any other large hospital in the country. ये हॉस्पिटल जो है ना तकरीबन 900 बेडेड हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे हमारे जो है ना 24 OPD सेक्शन है और 18 ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है, गायनी ऑपरेशन थिएटर है और हमारा जनरल ऑपरेशन थिएटर है। हमारे यहाँ पे जो है ना एकोकार्डियोग्राफी, ETT और हॉल्टर मॉनिटर, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, पेसमेकर्स, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। इस काम के लिए पहले बलूचिस्तान के मरीज़ों को कराची या लाहौर या पेशावर जाना पड़ता था, उनकी बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे मरीज़ों को फ्री एंजियोग्राफी और फ्री एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं। In the mid-1950s, Pakistan discovered natural gas in the small northern city of Balochistan named Sui. The gas discovered at Sui changed the country's economy forever, from cheap fuel for domestic use to giant chemical and fertilizer plants to power generation. Sui has become a national symbol of progress and self-sufficiency. The remaining reserves are estimated to be about 2 trillion cubic feet, with current production which is around 640 million cubic feet per day. The district, which is mostly a desert, forms part of Chaghi Rasko magmatic arc and is also home to the largest deposits of copper, silver, and gold. It is here that small places like Sandak and Rikodek are located, which are synonymous with large deposits of this wealth. According to an official estimate, the project of Sandak has the capacity to produce 15,800 tons of blister copper annually, containing 1.5 tons of gold and 2.8 tons of silver. The reserves were first discovered in the 1970s in partnership with a Chinese engineering company. The federal and provincial governments, along with the foreign company, are the major stakeholders. The ore is extracted from a large open-pit mine, which is several kilometers across and goes several hundred meters deep. In 2014, the Sandak
मकाम रखता है। ऑयल ड्रिलिंग में इसकी यूजेस हैं। ये एज अ कूलेंट काम करता है, ड्रिल बिट को ठंडा रखने के लिए, और एज अ फ्लूइड फ्रिक्शन को भी कम करता है। Jamalang coal mines, located about produced about 1.4 million tons of it in 2014 out of Pakistan's total production of 3.5 million tons. जो शरपसंद लोग थे उनको भगा दिया, लोग आगे काम शुरू कर लिया। अभी ये 8वां साल जो हो रहा है यहाँ लीज में काम कर रहे हैं। कम से कम 20,000 25,000 बंदे जो है यहाँ पे रोजगार करते हैं। Area is quite tough and we have certain posts where we do not have the tracks. Troops have to walk for certain distances in order to reach the post. But having said that, we are soldiers, we are meant to do this. The Frontier Corps is playing a major role side by side with the police and other armed services in maintaining a stable situation in the province. Their troops escort public transport on highways, providing safe passage to pilgrims visiting and returning from Iran. The Frontier Corps has established reception centers and a network of 24-hour helplines where ordinary citizens can safely walk in and report any incident which may lead to a crime situation or an actual crime. These centers help to prevent not only normal crimes, but actually lowered the incidence of terrorist-related acts. The Frontier Corps is running a whole chain of medical facilities, from medical reception centers to dispensaries and infirmaries to large hospitals. An important feature of the district, Zo, is the Sabakzai Dam, which has a storage capacity of 32,700 acre-feet of water to help irrigate 10,000 acres. जब से ये सबागजी डैम नहीं बना था तो यहाँ के लोग खाना बदोश और भेड़ बकरियाँ चराते थे। जब से ये डैम बन गया इन लोगों ने ज़राअत शुरू किया। पहले तो पानी नहीं निकाल सकते थे, फिर ये डैम जब बना तो इन लोगों ने ज़मींदारी शुरू की और वाटर मैनेजमेंट वालों ने नालियाँ निकाली और अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़राअत बहुत आगे निकल गया। अब 2003 के बाद बादाम, अनार, इसी तरह की अब और सब्ज़ी वगैरह भी यहाँ पे उगती है। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, डैम तामीर होने के लिए सक्सेसफुल इलाका है। This is just one example of the small and medium-sized dams that the Provincial Irrigation Department has planned and executed. The Irrigation Department has, in the past 2 decades, constructed 326 small and medium-sized dams, adding enormously to the water storage capacity. Around 52% of livestock, especially sheep and goats in Pakistan, comes from Balochistan. The province has 48% of the sheep, 28% of the goat, and 41% of the camel population of the country. The livestock head count has been steadily growing in the province, and in 2014, it was 33.2 million. The Department of Agriculture is running a pilot farm in Quetta, where a local breed of cow is crossed with a foreign breed to produce resistant and more productive animals.
लेबॉर्ट्री, ये एक स्पेशलाइज्ड लेबॉर्ट्री है जहाँ साइंटिफिक बुनियादों पे हम लोग फ्रीजियन बुल्स का सीमन कलेक्ट करते हैं। और हमारा जो मोटो है बेसिकली हम लोग एनिमल्स की जेनेटिक पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं, जिसमें हम 99% सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हम लोगों का जो 3 से 4 लीटर दूध देने वाली गायें थी उनकी अभी एवरेज मिल्क प्रोडक्शन 15 से 20 लीटर हो गई हुई। और इनके जो नर बछड़े थे वो हम लोगों ने मालदारों में तकसीम करवाए, जिसकी वजह से न सिर्फ बलूचिस्तान में दूध की पैदावार बढ़ी बल्कि पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से ये जानवर भेजे गए। इसमें पंजाब का है, खैबर पख्तूनख्वा हो गया और सिंध में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की कि जिसने ये एक बहुत बड़ा वो किरदार अदा किया इस ब्रीड में। In the city of Las Bela, a University of Agriculture, Water Resources and Marine Sciences has been established to promote a more scientific approach to the industry. इससे पहले हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, हमारे लड़के बाहर जाके दूसरे प्रोविंसेस से पढ़ के आते थे, जो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था और गरीब लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था। हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे अपने बच्चे अब अपने ही सूबे से तालीम हासिल करके जा करके अपने हैवानात की या एनिमल्स की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। About 65,000 fishermen sail in about 7,000 small and medium-sized boats to fish along the long coastline of Balochistan. The annual fishing harvest of the province during 2014 was around 144,000 tons, with a value of 14.5 billion rupees. The bulk of which comes around 45% from 2 ports, namely